If you kill two birds with one stone, it means you achieve two things with one action. यानी काम आप एक करते हैं लेकिन उससे आपकी दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, दो मसलों को हल कर लेते हैं. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my channel Brain in Taa'leem. This is Farzana Shaheen and we are doing idioms, and these idioms are related to animals, and it's second part. We just want to increase your vocabulary so you may be good at English. So first of all, I will give you a little introduction what the idioms are. In fact, they are like expression that take on a figurative meaning when certain words are combined, which is different from the literal definition of the individual words. यानी जो words होते हैं उनका एग्जैक्ट जो मतलब होता है, यानी लफ्जी मानी जिसको कहते हैं, वो इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब नहीं होता बल्कि डिफरेंट होता है. सो यू कैन से इट्स अ वर्ड, इट कुड बी अ वर्ड और फ्रेजेस which means something different from its literal meanings. यानी जो literal meanings है उससे इसका मतलब जो है वो different होता है और आप मुख्तलिफ टाइम स्पेस को यूज कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से piece of cake, it doesn't mean piece of cake exactly केक का टुकड़ा. No, it means very easy task to do, जो कुछ आप बहुत आसानी से कर सकते हो. So let's see some idioms today. Is part 2. First one is today eyes like a hawk. So आप समझ सकते हैं hawk क्या होता है? This animal, ठीक है. और इसकी नज़र बहुत तेज होती है. आपको पता है कि शिकार ऊपर से बहुत बुलंदियों पे उड़ता है और वहां से अपना शिकार देख सकता है. So that's why when we use it, if someone has eyes like a hawk, they have very good eyesight and they notice everything. दो चीजें हैं, eyesight भी अच्छी होती है और नोटिस करते हैं हर चीज पे, मतलब हर अटेंटिव होते हैं, बहुत ज्यादा हर चीज का ख्याल रखते हैं. तो ये तभी यूज होता है जब आप किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिसके अंदर ये क्वालिटीज हो. सो वी कैन सी हियर कैसे. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द प्रेसिडेंट्स bodyguards is over 60, but he's still got eyes like a hawk. He spotted a guy pulling over a gun 50 yards away and saved the president's life by pushing him to the ground. यानी 60 years age है लेकिन एक शख्स जो कि 50 yards के फासले पे खड़ा था वो गन निकाल रहा था और उसको उसने मतलब पकड़ लिया और प्रेसिडेंट की जान बचाई. The next example is you need eyes like a hawk to be a line judge at Wimbledon, especially these days when the top tennis players hit the ball so fast. यानी अगर आप जज बनते हैं किसी भी जगह पे, यहाँ पे गेम की बात हो रही है टेनिस प्लेयर्स के, वहाँ पे कहते हैं कि जज अगर अपने बनना तो आपकी आईज जो है वो आईज लाइक अ हॉक होनी चाहिए. तो एनीथिंग यू डू लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको जज करना है खास तौर पे, तो आपकी नजरें ऐसी ही होनी चाहिए ताकि आप हर चीज को नोटिस कर सकें और देख सकें. नेक्स्ट इज किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन. पता चल रहा है जो लफ्जी मतलब है कि एक पत्थर से दो परिंदों को मारना. तो इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम. It's used when if you kill two birds with one stone, it means you achieve two things with one action. यानी काम आप एक करते हैं लेकिन उससे आपकी दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, दो मसलों को हल कर लेते हैं. For example, I need to go to the bank, and if I drop the books off at the library on the way, I'll be killing two birds with one stone. You see? Next is Jenny says that she kills two birds with one stone if she does her own housework because she gets the house clean and she gets some exercise at the same time. So she is also killing two birds with one stone. काम एक हो रहा है और दो उससे फायदे हासिल हो रहे हैं. Next is let the cat out of the bag. काफी आपने सुना होगा ये, बिल्ली बैग से बाहर आ गई कुछ. So if you let the cat out of the bag, you let someone know a secret. तो आप कोई राज बता देते हैं. तो in which situations you do that और किस तरह से आप इसको यूज करेंगे? We have planned a surprise party for Dina, but some guy she works with let the cat out of the bag, so now she knows. So that's not good. So ऐसा नहीं करना चाहिए, right?
Don't forget that this is a secret. So whatever you do, don't let the cat out of the bag. So ये काफी डिटेल्स के जुमले हैं, सिचुएशन बताई गई है ताकि आपको पता चल सके कहाँ पे यूज करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर. आपको पता है कि फिश जो है वो पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती. अगर वो पानी से बाहर हो तो कैसे उसकी तड़प होगी. तो ये इस सिचुएशन से आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे यूज होगा. So you feel like a fish out of water if you are surrounded by people who are different to you. जो लोग आपसे मुख्तलिफ हों. और दूसरी सिचुएशन, and it's making you feel a little uncomfortable. और आप मतलब वहाँ पे कंफर्टेबल भी महसूस नहीं कर रहे, यानी आप वहाँ पे खुश नहीं हैं, आप कुछ बेचैनी है आपके अंदर. So here we can see in the sentences, I was the only black person in a church full of white people, and I felt like a fish out of water at first. But lots of people came up and talked to me after the service, and I soon felt quite at home. यानी पहले जब वो महसूस कर रहा था कि बाकी सारे white लोग हैं और वो black है, so he was upset, like not feeling comfortable. Later on when they talked to him, he was feeling like it's his own place. Amina travels to a lot of unusual places. He says, feeling like a fish out of water is sometimes interesting. So ये सिचुएशन सिर्फ नेगेटिव में नहीं जाती, यहाँ पे इसी को पॉजिटिव वे में यूज किया गया है. That she travels a lot of places, और जाहिर है नई जगहें होती हैं उसके लिए, लेकिन she is enjoying. So this could also be the situation if you want to use them in the sentences. Take the bull by the horn. You have seen the bull. अगर आप उसको सींगों से पकड़ते हैं तो what does it mean? आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं. ठीक है. तो ऐसे मौकों पे यूज होगा ये. If you take the bull by the horns, you deal with problem or a challenge in a direct and fearless way. यानी आप चैलेंज को डायरेक्टली कबूल करते हैं, प्रॉब्लम या चैलेंज को, और बिला खौफ करते हैं. How will you use in sentences? Mahi wasn't happy with the manager's decision, so she took the bull by the horns and demanded to see him in order to discuss the matter. Like अपने बॉस से कोई नहीं वरना करता ना, so you can see here. The magazine's sales were falling, so the owner took the bull by the horns and replaced the editor, had the layout redesigned, and brought in new writers. So this was important. Now here we have some quiz, so we may know how much you learned. First one is, which of these people would need eyes like a hawk? A pilot who searches for lost people, a sound engineer who records the music, a chef who makes cakes and desserts. Who needs that? Tell me. Mark your answer. Yes, it is that. A pilot who searches for lost people. वहाँ पे उसको ज़रूरत है तेज नज़र की. Next question is, after Junaid let the cat out of the bag, so what's the right option? Everybody laughed, we all knew, or they ran after it. What was that? Yes, we all knew. Good, you're right. Third one is, Pablo went to the party, but he felt like a fish out of water because. So what's the reason? He was tired of eating meat and chicken? He had forgotten to take his swimming shorts? Or he was the only Mexican guy there? What's the right option? Yes, that's the answer. He was the only Mexican. Different था ना वहाँ पे वो. Then the team wasn't playing well, so the coach took the bull by the horns and sacked several senior players, told everybody he was doing his best, asked the players to try a bit harder. आपके ख्याल में कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? क्या किया होगा? It sacked several senior players because बात क्या है कि चैलेंज, जाहिर सीनियर प्लेयर्स थे, उनको बाहर निकाल देना, that's a challenge. Next, Samra killed 2 birds with 1 stone by going to Paris. She practiced her French before her exam, and she
got better at speaking French, read a book on French history, or went to her friend's wedding? What's the best option? Let's see, what's your answer? Yes, right one is went to her friend's wedding. अब जब वो French सीख ली थी और फ्रांस वो गई शादी पे, so it was not a problem for her. She enjoyed a lot. So that's all for today. And thank you so much for being with me. I hope you enjoyed. अपने comments नीचे लिखिएगा और बताइएगा कि कैसा रहा. यूज करें. So like it, share it, and keep watching. Wait for the next video. And तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.